बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुतीब रज़ा और आप देख रहे हैं मुतीब रज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोटीन्स। इसके हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स? ऑप्शन ए हीट, ऑप्शन बी चार्ज, ऑप्शन सी पीएच चेंज, ऑप्शन डी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी चार्ज। MCQs number 2, which of the following is responsible for specifying the 3D shape of a protein? Option A, the peptide bond, option B, the amino acid sequence, option C, interaction with other polypeptides, option D, interaction with molecular chaperones। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द अमाइनो एसिड सीक्वेंस। MCQ number 3, dash is not a classified form of conjugated proteins. Option A, lipoproteins, option B, glycoproteins, option C, metalloproteins, option D, complete proteins। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, कंप्लीट प्रोटीन्स। MCQ number 4, what is the average molecular weight of an amino acid residue in a protein? Option A 120, option B 110, option C 130, ऑप्शन डी 140। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 110। MCQs number 5, which of the following proteins was first sequenced by Frederick Sanger? Option A myosin, option B insulin, option C myoglobin, option D hemoglobin। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इंसुलिन। MCQ number 6, which of the following statements is true about proteins? Option A, protein are made up of amino acid. Option B, protein are essential for the development of skin, teeth and bones. Option C, protein is the only nutrient that can build, repair and maintain body tissues. Option D, all of the above। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, all of the above। MCQ number 7, how many amino acids make up a protein? Option A 10, option B 20, option C 30, option D 50। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 20। MCQs number 8, what is a bond between amino acid called? Option A ionic bond, option B acidic bond, option C peptide bond, option D हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पेप्टाइड बॉन्ड। MCQs number 9, which of the following statements is true about proteins? Option A, proteins are polymers of glucose. Option B, proteins are polymers of amino acids. Option C, proteins are polymers of peptide bonds. Option D, proteins are polymers of disulfide bridges।
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। MCQs number 10. Which of the following food products are high in protein content? Option A, tofu and eggs. Option B, grains and legumes. Option C, milk and milk products. Option D, all of the above. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following statements is true about the complete proteins? Option A, high protein food that stabilize body weight. Option B, food that has a balanced amount of fat and protein. Option C, foods that provide all the amino acids that the body needs. Option D, all of the above. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। MCQ number 12. Which of the following techniques is used to determine the protein structure? Option A, X-ray crystallography. Option D, cryptonics X-ray vision. Option C, magnetic resonance imaging MRI. Option D, none of the above. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। MCQ number 13. Which of the following disorders is caused by the deficiency of proteins? Option A, weight loss. Option B, muscle fatigue. Option C, loss in muscle strength. Option D, all of the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। MCQs number 14. Which of the following cell organelles is involved in the process of protein synthesis? Option A, vesicles. Option B, ribosomes. Option C, synchrotrons. Option D, mitochondria. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राइबोसोम्स। MCQs number 15. Which of the following is not the function of proteins? Option A, helps in digesting food. Option B, carries genetic information. Option C, fights against the invading pathogens. Option D, help in transporting oxygen. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, carries genetic information. MCQ number 16. The 3D structure of protein can be determined by option A, spectroscopy. Option B, X-ray crystallography. Option C, nuclear magnetic resonance. Option D, both B and C. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जिसमें दोनों ऑप्शन आ जाते हैं बी और सी। Which of the following is true about enzymes? Option A, proteins. Option B, nucleic acids. Option C, carbohydrates. Option D, DNA molecule. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रोटीन्स। MCQ number 18. Which of the following statements is true about the primary structure of protein? The helical structure of the protein. Option B, subunit structure of the protein. Option C, three-dimensional structure of the protein. Option D, the sequence of amino acid joined by a peptide bond. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ज्वाइंड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड।
MCQ number 19. Which of the following diseases is caused by protein deficiency? Option A anemia, option B kwashiorkor, option C hypothyroidism, option D all of the above. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी क्वाशियार्कर। MCQs number 20. The process of protein synthesis take place in which of the following cell organelle? Option A nucleus, option B vacuoles, option C cytoplasm, option D mitochondria. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी साइटोप्लाज्म। देखने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।